हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर: The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Question: Directions. In each of the following sentences, there are 3 blank spaces. Below each sentence, there are 5 options, and each option consists of 3 words which can be filled in the blanks to make the sentence grammatically correct. So जितने भी following sentences हैं, वहाँ पे 3 blanks दिए गए हैं. Below each sentence, there are 5 options. 5 options दिए गए हैं. And each option consists of 3 words. हर option में 3 words दिए गए हैं, जो कि भरे जा सकते हैं, which can be filled in the blanks to make the sentence grammatically correct. Sentence को grammatically correct बनाने के लिए. So question है IBPS बैंक क्लर्क मेंस 2016 का. Question है Indian cricket has seen many dash captains, but Dhoni was certainly a and dash one in many ways. As skipper, he mainly focused on cultivating team spirit and creating dash for young players. So आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं. ए एक्सेप्शनल, डिमिनुटिव, चांसेस. बी स्टडी, serendipitous, chances. D stalwart, extraordinary, opportunities. E common, exceptional, prospects. सो आशा करते हैं आप दिए गए ऑप्शन समझ चुके हैं. सो हियर सेरेंडिपिटस का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाना एक तरीके से, और स्टॉलवर्ट का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे वफादार. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है डी स्टॉलवर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज. सॉल्यूशन है डी स्टॉलवर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज इज द करेक्ट चॉइस. स्टॉलवर्ट मींस लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. सो सेंटेंस को इस तरह से पढ़ेंगे हम. इंडियन क्रिकेट हैज सीन मैनी stalwart captains यानी वफादार, but Dhoni was certainly an extraordinary one in many ways. So an extraordinary one in many ways. As skipper, he mainly focused on cultivating team spirit and creating opportunities for young players. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. पाकिस्तानीज डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ for all practical purposes recently dashed Israel with a nuclear attack in response to a fake news report that the Israelis had said they would use nuclear dash against Pakistan if it sent ground troops to Syria. So आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं. ऑप्शन दिए गए. ए थ्रेटेंड, रिटेलिएटरी वेपन्स. बी jeopardize reciprocating armor. C admonish riposte weapon. D rebuked counter armament. E rebuff retorted weapons. आशा करते हैं आप ऑप्शन समझ चुके हैं. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है ए थ्रेटेंड रेटिलिएटरी वेपन्स. सोल्यूशन है ए थ्रेटेंड रेटिलिएटरी वेपन्स इज द करेक्ट चॉइस. सो सेंटेंस इस तरीके से पढ़ा जाएगा. पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ for all practical purposes recently threatened Israel with a nuclear attack in response to a fake news report that the Israelis had said
they would use nuclear retaliatory weapons against Pakistan if it sent ground troops to Syria. So, आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. Retaliatory means the action of returning military attack, counter attack. Next question. The line seems to be a direct dash to the establishment of a caliphate, but those who know the context of Faz, the poet, the man and his work correctly interpret it as communist vision of life with the dash of the prevailing. So आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं. ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं. ऑप्शंस हैं ए कमेंडेशन डेमोक्रेसी पेरिकैरिएट, बी इन्वोकेशन डिक्टेटरशिप proletariat, C intercession autonomy rebel, D citation anarchism bourgeoisie, A intervention despot common people. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है हमारे बी इन्वोकेशन डिक्टेटरशिप प्रोलिटेरिएट. सॉल्यूशन है invocation means the action of invoking someone or something. Proletariat means working class people regarded collectively, often used with reference to maxim. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question: and news and social media companies have a moral to ensure that they do not directly or otherwise deliberately dash the facts to their audiences and pass them off for news. If it is a post-truth word we dash, this becomes especially important. So दिए गए ऑप्शन से ए ऑब्लिगेशन डिस्टॉर्ट डिजायर, बी कमिटमेंट टार्निश डिनाउंस, सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसरिप्रेजेंट इनहेबिट, डी परपर्ट बेसमिर्च स्टिग्मेटाइज, ई इम्प्लीकेशन इनहेंस रिजाइड. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसरिप्रेजेंट इनहेबिट. सोल्यूशन है responsibility misrepresent inhabit fits the blanks में appropriately. Next question है activists in the country have long protested its dash society that essentially dash women from traveling, marrying or attending college without permission from a male relative who is called their dash. The options है benevolent forbid, steward, B pre-adamite prevent, custodian, C preeminent restrict protector, D venerable condemns municipal, E patriarchal prohibits guardian. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर ई पेट्रियार्कल प्रोहिबिट्स गार्जन. सॉल्यूशन है ई पेट्रियार्कल मीन्स रिलेटिंग टू और डिनोटिंग सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट कंट्रोल बाय मैन. Prohibits means formally forbids something by law, rule or other authority. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे. डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं. In each of the following questions, a short passage is given with one of the lines in the passage missing
and represented by a blank. Pick out the option which, when used to start a sentence, combines both the above sentences in one. Select the best out of the five answer choices given to make the passage complete and coherent. So IPS क्लर्क मेन 2017 का क्वेश्चन है. So क्वेश्चन क्या है? Dash, our society is still deeply mired in propagating caste and religious prejudices rather than take up the issue in isolation. We need to strike at the root cause. Caste prejudice. I wonder how this marginalized community will be able to attain some kind of social mobility even with reservation. When there is a growing anti-reservation sentiment, we need to do something for them which is sustainable and helps them in achieving a social status on their own. So options दिए गए हैं. A, because there is no support by society to eliminate the most inhuman of professions, manual scavenging still persists, which is the basic reason. B, because there is despicable practice of manual scavenging which still persists in India. So society support inhuman profession. C, the basic reason why the despicable practice of manual scavenging still persists in India is because there is negligible or no support by society to eliminate this most inhuman of professions. D, no support by society to eliminate this most inhuman of professions. Manual scavenging still persists in India, which is a E. Why the despicable practice of manual scavenging still persists in India is negligible and no support by society. So आशा करते हैं ऑप्शन समझ चुके हैं. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और ब्लैंक को फिल करना है, पैसेज को पूरा करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. Correct answer is C. The basic reason why the despicable practice of manual scavenging still persists in India is because there is negligible or no support by society to eliminate this most inhuman of professions. Solution है C. Again the same. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Next question है directions. In each of the following questions, a short passage is given with one of the lines in the passage missing and represented by a blank. Pick out the option which, when used to start a sentence, combines both the above sentences in one. Select the best out of the five answer choices given to make the passage complete and coherent. IPS clerk May 2017. So question है dash more than half of the are under cultivation does not have access to irrigation. Agricultural income generated at average size of land holding is not adequate to meet farmers' needs. So farmers की जो needs है. Modern agriculture requires investment in farm machinery and use of purchase inputs like seed, fertilizers, agri chemicals, diesel and hired labor. So modern agriculture की requirements है. Most often सबसे ज़्यादा अगर बात करें savings generated from unremunerative crop enterprise are inadequate for such investments. Rising expenses on health, जो बढ़ते हुए expenses है health पे, education पे, social ceremonies पे, and non-food items put additional financial demand on farm families. So आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं. A. Indian agriculture low scale and low productivity about 85 of the operational land hold the country below 5 acre and 67 farm house hold 1 acre. B. Indian agriculture is known by low scale and productivity. Operational land holding in country below 5 acre and 67% farm households survive average. C. About 85% of the operational land holding is below 5 acres and 67 households Indians survive on average land holding on 1 acre. D. About 85% of the operational land holding in the country are below 5 acre and 67% average land holding on 1 acre. E. Indian agriculture is characterized by low scale and low productivity. About 85% of the operational land holdings in the country are below
5 acres and 67% farm households survive on an average land holding of 1 acre. सो आशा करते हैं आप ऑप्शन समझ चुके हैं. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. Correct answer E. Indian agriculture is characterized by low scale and low productivity. About 85% of the operational land holdings in the country are below 5 acres and 67% farm households survive on an average land holding of 1 acre. Solution है again the E. Next question की ओर बढ़ते हैं. Question. Directions in each of the following questions in a short passage is given with one of the lines in the passage missing and represented by a blank. Pick out the option which, when used to start a sentence, combines both the above sentences in one. Select the best out of the 5 answers choices given to make the passage complete and coherent. IPS Clerk Main 2017. Question पढ़ लेते हैं. Dash, however, with the declaration of peace, there was a need to do something about the installed capacity. And so, in 1946, Tupperware Company came into being. So, Tupperware Company आई existence में अपनी. At present, the use of plastic has become so ubiquitous that even birds, animals and fish have unwittingly made it part of their diet. So, ना चाहते हुए भी अपनी डाइट का पार्ट बना लेते हैं उसे. Disposed plastic degrades slowly. So, disposed plastic जो होती है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती है. Its chemicals getting leached into surroundings, जो आसपास की surroundings है. Further, it breaks down into smaller components over time, समय के साथ. एंटरिंग आवर फूड चेन, जो हमारी फूड चेन है उसमें एंटर करती है. लैंडिंग अप ऑन आवर प्लेट्स, और हमारी प्लेट में लैंड करती है यानी पाई जाती है, जो खाना हमें परोसा जाता है उसमें. सो ये सारी बातें चल रही है प्लास्टिक के डिग्रेडेशन को लेके. इस तरह से वो नुकसानदायक होता है हमारे लिए. और टपरवेयर कंपनी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है. ऑप्शंस की बात कर लेते हैं. ए, द फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक वाज कॉल्ड बैकेलाइट and was derived from fossil fuels. So bakelite होता है एक तरह का क्या प्लास्टिक. Large scale production during Second World War was directed for war effort. B, plastics had their origin in cellulose derivatives. The first synthetic plastic was called bakelite and was derived from fossil fuels. During the Second World War, large scale production of plastic was directed towards the war effort. C, plastic originates from derivatives. Bakelite was derived from fossil fuels. Large-scale production of plastic was directed toward the war effort. D, during the Second World War, large-scale production of plastic was for war effort. The first plastic bakelite. E, during bakelite was called first synthetic plastic was derived from fossil fuel. Plastic had origin in cellulose derivatives. Large-scale production of plastic towards war. Dash. सो आशा करते हैं ऑप्शन समझ चुके हैं. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा बी, प्लास्टिक हैड देयर ओरिजिन इन सेलुलोज derivatives. The first synthetic plastic was called bakelite and was derived from fossil fuels. During the Second World War, large-scale production of plastic was directed towards the war effort. Solution है अगेन द बी. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Directions in each of the following questions, a short passage is given with one of the lines in the passage missing and represented by a blank. Pick out the option which, when used to start a sentence, combines both the above sentences in one. Select the best out of the 5 answer choices given to make the passage complete and coherent. So IPS Clerk Main 2017. Question पढ़ लेते हैं. Dash the concept credited to British economist John Maynard Keynes
has been heavily criticized for its assumption that people are naive. The theory of rational expectations, which among other things states that people learn from experience and can reset their earlier beliefs, was a response to the idea of money illusion. So आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं. ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं. ऑप्शंस हैं the people care about the nominal value money rather than its real value. Workers, for instance, would be impressed if their wages double in a year if real money drop more than half. B. The notion that people care about drop by more than half during the same period. According to this idea, workers, for instance, would be impressed if their wages gets double. C. The notion that people care more about the nominal value would be impressed if their wages double than its real value. Real values of their money were to drop by more than half during the same period. D. The notion that people care more about the nominal value of money rather than its real value. According to this idea, workers, for instance, would be impressed if their wages double in a year, even if the real value of their money were to drop by more than half during the same period. E. The notion were to drop by more than half during the same period. According to this idea, workers, for instance, would be impressed if its wages double. So आशा करते हैं आप ऑप्शन समझ चुके हैं. दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. Correct answer is D. The notion that people care more about the nominal value of money rather than its real value. According to this idea, workers, for instance, would be impressed if their wages double in a year, even if the real value of their money were to drop by more than half during the same period. Solution है D. The notion that people care more about the nominal value of money rather than its real value. According to this idea, workers, for instance, would be impressed if their wages double in a year, even if the real value of their money were to drop by more than half during the same period. तो the same again. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Next question है directions. In each of the following questions, a short passage is given with one of the lines in the passage missing and represented by a blank. Pick out the option which, when would use to start a sentence, combines both the above sentences in one. Select the best out of the 5 answer choices given to make the passage complete and coherent. So question है हमारा dash down the ages, man has tried to discover life's meaning. सो मैन ने कोशिश की है डिस्कवर करने की लाइफ के मीनिंग को. द पर्पस ऑफ लिविंग क्या है? वेदर देयर इज अ गॉड और रिलीज फ्रॉम सफरिंग एंड टू अटेन टू सम स्पिरिचुअल स्टेट वेयर ऑल द क्वेश्चंस आर अंडरस्टूड बाय सम एक्सपीरियंस एंड ट्रांसीडेंट मिस्टिकल यूनियन विद द अल्टीमेट. आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं. ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं. ऑप्शन है ट्राइंग टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट is not possible, that the very want is not different than any other want that we might have. B. The very want is not different than any other want. It is not possible. C. Trying to be something that you are not is possible. The very want is not different. D. We might have something that we are not is not possible. The very want is not different. E. Not different than any other want that they might have. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है ए. ट्राइंग टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट is not possible. The very want is no different than any other want that we might have. Solution है A. Trying to be something that you are not is not possible. The very want is no different than any other want that we might have. So again the same. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Directions. Each of the following questions has a paragraph from which a sentence has been deleted. 3 statements are given from which any number of the statement can fit and provide coherent meaning to the paragraph from the given options. Choose a sentence that completes the paragraph in the most appropriate way. So question है the accomplishments of modern India are recognized around the world. So जो modern India के जो accomplishments हैं
वो रिकग्नाइज किए जाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. अ कंट्री दैट वाज अ सिंबल ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड admonished for its Hindu rate of growth during the initial decades has now transformed itself into one of the fastest growing major economies. So एक कंट्री की बात चल रही है यहाँ पे, दैट वाज अ सिंबल, जो कि सिंबल थी ऑफ हंगर. किसका? हंगर का और एंड पॉवर्टी का, गरीबी का और भुखमरी का, एक तरीके से. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के समय पे. एंड एडमोनिस्ड फॉर इट्स हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द इनिशियल डिकेड्स हैज नाउ, अब क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्म हो गई है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है इट सेल्फ इनटू वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज. सो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो मेजर इकोनॉमीज है उनमें से एक है ये भी अब. डैश एंड बीइंग अ मल्टी रिलीजियस सेकुलर एंटिटी. सो मल्टी रिलीजियस सेकुलर एंटिटी बन चुका है, but the potential for growth remains strong despite some slackening. One, options दिए गए हैं. Democratic governance, the decision-making process that translates citizens' preferences into policy actions, is a crucial component of ensuring that democracy delivers. Two, between elections, citizens must have avenues to participate in decision-making, stay informed, and hold government accountable for its performance. 3. These economic achievements are extensive, especially when considering the challenges that arose from following democratic governance after decades of oppressive colonial rule. So, select the most appropriate options. A only 1, B only 2 and 1, C only 3, D only 2, E all are correct. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है सी ओनली 3. सोल्यूशन है सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस. Statement 3 is the best connecting statement because the sentence before blanks discusses about fastest growing major economies, which then only choice 3 takes further. Next question है. Directions, each of the following questions has a paragraph from which a sentence has been deleted. Three sentences are given from which any number of the statements can fit and provide coherent meaning to the paragraph from the given options. Choose the sentence that completes the paragraph in the most appropriate way. So sentence है हमारा. Giving begins with the recognition of having abundantly. This sense of abundance has less to do with the quantity one has and more to do with one's sense of sufficiency. Giving is an expression of not just your material richness but dash in the value of giving. One can recognize the mystery of flow of currency of life, nurturing forces, whether one gives education, clarity, and organ, blood, money, material effort, or just a warm smile. So giving की बात चल रही है यहाँ पे. So ऑप्शन दिए गए हैं. 1 of affluent expression and recognition. 2 of you being rich inwardly in love and care. 3 abundance of our material richness. So दिए गया है. Select the most appropriate option. A only 1, B only 2 and 1, C only 3, D only 2, E all are correct. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है डी ओनली 2. सोल्यूशन है डी बट is a hint here which indicates contrast with the statement before the blank. Hence, statement 3 eliminated as it shows no contrast. Sentence 2 is the correct choice and gives coherent meaning. So, of you being rich inwardly in love and care. Next question की ओर बढ़ते हैं. Directions, each of the following questions has a paragraph from which a sentence has been deleted. Three statements are given from which any number of the statements can fit and provide coherent meaning to the paragraph from the given options. Choose a sentence that completes the paragraph in the most appropriate way. So question है हमारा. The government wants to reimpose curbs on gold imports after Diwali to discourage people from buying gold.
सो गवर्नमेंट क्या चाहती है, रीइम्पोज करना चाहती है कर्ब्स को ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स, गोल्ड का जो इंपोर्ट है आफ्टर दिवाली, दिवाली के बाद, टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम बाइंग गोल्ड. दैट इज नॉट a good idea. Any attempt to curb demand artificially through quantitative restrictions on or higher import duties dash. However, the government is worried that the surge in gold imports could undermine India's balance of payments position. So आशा करते हैं हम सेंटेंस समझ चुके हैं. ऑप्शंस दिए गए हैं. 1. Will only encourage more smuggling and revive the unauthorized hawala market. 2. India's gold imports in September rose 31% from a year ago as jewelers increased their purchases ahead of a festival at the end of the month. Provisional data from GFMS showed. 3. Gold buying during Dashera is considered auspicious. Select the most appropriate option. A only 1, B only 2 and 1, C only 3, D only 2, E all are correct. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है ए ओनली 1. सोल्यूशन है A. Option A is the correct choice. Statement 1 is the only coherent meaning here. Question. Direction. Each of the following questions has a paragraph from which a sentence has been deleted. 3 statements are given from which any number of statements can fit and provide coherent meaning to the paragraph from the given options. Choose the sentence that completes the paragraph in the most appropriate way. So, question है हमारा. Delhi's air quality deteriorates with unfailing regularity at this time of the year, with large swaths of North India in the grip of suffocating smog, but the state governments that can make it easier for millions to breathe do not act with any sense of urgency. That it has turned into a public health emergency in the capital, with the air quality index touching extremely hazardous levels in some parts, necessitating the closure of primary schools has further lowered its standing. It is unconscionable for governments, through indifference and inaction, to subject citizens to such toxic air and their respiratory ailments and impaired lung function. आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं. ऑप्शंस की ओर आते हैं. 1. Cause extreme suffering especially among people with. 2. Resultant in extreme effects for people with. 3. Cause problems and many health issues for elderly people and. Select the most appropriate options. A only 1, B only 2 and 1, C only 3, D only 2, E all are correct. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है ए ओनली 1. सोल्यूशन है A. Option A is the correct choice. Statement 2 and 3 do not fit with this sentence given after the blank. Question है. Direction. Each of the following questions has a paragraph from which a sentence has been deleted. 3 statements are given from which any number of the statements can fit and provide coherent meaning to the paragraph from the given options. Choose the sentence that completes the paragraph in most appropriate way. So, question है हमारा. On the first anniversary demonetization, it is unambiguously clear that the project has been a resounding political success. It sent out a clear message that the government is determined to clamp down on a black money and is prepared to take unorthodox measures for the purpose. Since the government continues to celebrate the move dash. So options दिए गए. Next move was yet to find out flush out the black money. 2. It follows that more steps are likely to expose black money to validate demonetization. 3. Government celebrates the first anniversary of demonetization. Select the most appropriate option. A only 1, B only 2 and 1,
C only 3, D only 2, E all are correct. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी ओनली 2। सोल्यूशन है डी। Eliminating from the choice given, statement 1 is incorrect as it is past tense, hence not in sync with the given statement. Statement 3 also get eliminated as it is redundant. Only choice 2 is correct, hence is the right answer. आशा करते हैं आपने इस क्लास से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी एक अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।